This is 2011 when I was in grade 8. I was scolded by my English tutor in front of everyone because I had scored the poorest marks in English amongst the batch. Not only that, I was asked by my English tutor that if I don't improve my writing skills and speaking skills, I won't be able to clear the examinations. In fact, 2015 में जब मैं 12th standard में था, मेरे सबसे कम नंबर इंग्लिश सब्जेक्ट में ही आए थे. I was very very disappointed because इंग्लिश में मुझे 63 मार्क्स मिले थे and बाकी सब सब्जेक्ट्स में मुझे 90+ मार्क्स मिले थे. And that day only I was like कि यार मैं इतना वीक हूँ क्या, मतलब मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, लिखना नहीं आता, बोलना नहीं आता, तो मैं आगे जाके सक्सेसफुल कैसे हो जाऊंगा. आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इंप्रूविंग माई कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स. आई स्टार्टेड टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मिरर डेली फॉर 1 minute for 6 consecutive months. And not only that, I started writing on LinkedIn almost on a regular basis, where I used to vent out my feelings, my thoughts on a piece of paper, and that used to get converted in my LinkedIn posts as well. And few years down the line, who would know that the same person who was scolded by his English tutor in front of 60 odd students in the classroom would write his second book and publish it with the leading publisher of India, Penguin India. And this is the book Unlocking Unicorn Secrets, which we have released today, 15th of August. And this is 77th Independence Day of India, and on a patriotic occasion we wanted to promote entrepreneurship, and that is why we are launching this book Unlocking Unicorn Secrets. In this video we'll just discuss how my entire journey was of writing this book, कैसे हमने reach out किया सारे 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स को, what was the experience like, what type of questions we asked, what are some of the insights that you are going to get in this book, and most importantly, how did we convince Penguin India, which is the leading publisher, to publish our book. तो ये जैन 2022 की बात है जब ईशान और मैं हम लोग बात कर रहे थे, एंड आई जस्ट पिच्ड एन आइडिया टू ईशान कि ईशान, इंडिया में कोई ऐसा बुक नहीं है जहां पर 20 से 25 यूनिकॉर्न फाउंडर्स का स्टोरीज कवर किया जा सकता है. एंड आई टोल्ड हिम दैट 25 यूनिकॉर्न फाउंडर्स का स्टोरी कवर करते हैं. एंड धीरे धीरे जैसे हमने इंटरव्यूज लेना शुरू किया, हमें ये रियलाइज हुआ कि 25 अगर कवर किया तो बुक बहुत थिक हो जाएगी. अभी ये बुक 220 पेजेस की है. एंड देन आई जस्ट टोल्ड ईशान कि लेट्स राइट अ बुक, एंड विद इन अ सेकंड ईशान अग्रीड एंड ही वाज लाइक या आई एम ऑन बोर्ड एंड आई वांट टू बिकम अ को-ऑथर फॉर दिस बुक. एंड आई वाज जस्ट एस्टोनिश्ड एंड आई वाज लाइक कि मेरे को लगा ये मजाक कर रहा है. तो उसके बाद मुझे समझा कि हमने 100 यूनिकॉर्न फाउंडर्स का लिस्ट बनाया, हमने उनके ईमेल आईडीज ढूंढे, एंड देन वी स्टार्टेड सेंडिंग कोल्ड ईमेल्स टू ऑल द यूनिकॉर्न फाउंडर्स. मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या था. हमने 100 यूनिकॉर्न फाउंडर्स का लिस्ट बनाया, उसमें से 50 मैंने ईमेल किए थे, 50 ईशान ने ईमेल किए थे. एंड आप सब्जेक्ट लाइन सुनकर हैरान हो जाओगे एंड आप हंसने लग जाओगे हमने क्या क्या सब्जेक्ट लाइन यूज किए थे. पहले हमने ये यूज किया था, रीड नाउ और रिग्रेट लेटर. फिर एक बार ईशान ने तो ये यूज किया था, यू कांट मिस टू रीड दिस. फिर एक बार हमने ये यूज किया था कि फर्स्ट नेम जो भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आशीष मोहपत्र है ऑफ बिजनेस, तो हमने ये यूज किया था, आशीष यू कांट मिस टू रीड दिस ईमेल. तो हमने ये सब्जेक्ट लाइन यूज किया था. फिर ईशान ने तो एक ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया था जहां पर हमने ऐसे ट्राई किया था कि हम लोग उनका अटेंशन कैच करने के लिए क्या लिख सकते हैं. वी वर जस्ट वंडरिंग कि क्या लिख सकते हैं, एंड देन अल्टीमेटली वी जस्ट सेंट ईमेल्स विद द सब्जेक्ट लाइन इंटरव्यू इन्विटेशन फॉर द बुक अनलॉकिंग यूनिकॉर्न सीक्रेट्स. एंड उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि रिप्लाईज तो आ नहीं रहे फाउंडर्स के. तो मैं आपको बताता हूँ 100 लोगों को हमने ईमेल भेजा था, उसके बाद हमको सिर्फ एक फाउंडर का रिप्लाई आया था. दैट वाज द फर्स्ट इंटरव्यू व्हिच वाज शेड्यूल्ड ऑन Zoom. So the founder's name is Ashwin Damera. Of course, a special thanks to him because he was the first one to give the interview. Although that was virtual, but we are very very grateful to him because उनका नाम लेके हम लोग बाकी फाउंडर्स को रीच आउट कर पाए. तो हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, हमने ईमेल्स फिर फाउंडर्स को नहीं भेजे, हमने ईमेल्स उनके पीआर टीम को भेजी, पब्लिक रिलेशंस टीम जो होती है हर एक कंपनी में. हमने उन्हें बताया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्या स्टोरीज कवर करनी है, हमारा सोशल मीडिया फॉलोइंग कितना है, एंड हमने प्रीवियसली कौन से लोगों को इंटरव्यू किया है. सो इट्स नॉट दैट वी आर डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट इज व्हाट गिव कॉन्फिडेंस टू द पीआर टीम एज वेल. एंड मेरा हमेशा हर एक पीआर टीम के साथ कम से कम आधे घंटे का कॉल होता था, जहां पर वो मेरा इंटरव्यू लेते थे, पूरा पूछते थे कि तुम लोग क्या पूछने वाले हो, तुम लोग ने कभी पहले ऐसा किया है क्या, व्हाई डू यू थिंक वी शुड गिव यू अ चांस टू इंटरव्यू दीज बिलियनियर फाउंडर्स हु आर देयर, एंड अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस. मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मेरा 30 मिनट्स का इंटरव्यू लिया जा रहा है. बट दैट वाज ऑल टुगेदर एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. आवर फर्स्ट इन पर्सन इंटरव्यू वाज इन जून 2022 with Ashish Mohapatra and Ruchi Kalra, founders of Business and Oxyzo, which is a $6 billion entity combined. And trust me, this was one of the best interviews honestly. हम लोग जब ऑफिस में गए थे दिल्ली में उनके, Ruchi Kalra herself came to the reception and she was the one who greeted us, showed the entire office and she took us to the meeting room which was there, and we were surprised. वहां पर कोई भी केबिन का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर बहुत सारे वर्क स्टेशंस थे, बहुत सारे मीटिंग रूम्स थे. इनफैक्ट बोथ द फाउंडर्स Ashish Mohapatra and Ruchi Kalra, they also worked out of a workstation or a meeting room itself, and उनका कोई केबिन सिस्टम था ही नहीं. That inspired us and that taught us a culture which was very open, very transparent, and that also taught us कि यार इसमें कोई एम्प्लॉय माइंडसेट नहीं होता है. Everyone is equally minded, everyone is like minded, everyone is equal in stature,
be it the founders, be it the employees, be it the staff, support staff which is there, and everyone is treated equally. That was just commendable. And धीरे धीरे हमने फिर सारे इंटरव्यूज खत्म किए. एंड मुझे आज भी एक इंसिडेंट याद है कि हम लोग प्रिस्टीन केयर के फाउंडर को इंटरव्यू करने गए थे. हमारा इंटरव्यू 1 बजे का शेड्यूल था. एंड ईशान एज यूजुअल ही इज नॉट पंक्चुअल एट ऑल. तो मैं उसको क्या बोलता था कि 12:30 का इंटरव्यू है, ताकि हम लोग एटलीस्ट 12:30 के पहले पहुंच जाए. और मैं उसको बोलता था इंटरव्यू के डेस्टिनेशन पे कि अरे अपना 1 बजे का इंटरव्यू है, मैंने तो तेरे को जल्दी बोला बिकॉज तू जल्दी आ सके. तो ये जो इंटरव्यू था वो 1 बजे का था. ईशान ने गलत लोकेशन डाल दिया था गूगल मैप्स पे एंड वी कुडंट रीच एट 1 PM फॉर दिस इंटरव्यू. वी एंडेड अप रीचिंग एट 1:25 PM एंड वही दिन हमारी फ्लाइट थी घर पे जाने के लिए शाम को 7:30 बजे की. अनफॉर्चुनेटली फिर फाउंडर ने बोला कि आधे घंटे में तो हो नहीं सकता, सो लेट्स रीस्केड्यूल. एंड फॉर्चुनेटली वी गॉट अ टाइम स्लॉट फॉर द सेम इवनिंग 8:30 बजे रात को. एंड वी टुक एन इंटरव्यू फ्रॉम 8:30 PM to 10 PM दैट सेम फ्राइडे इवनिंग एंड वी हैड टू रीस्केड्यूल आवर फ्लाइट. तो हमने हमारी फ्लाइट नेक्स्ट डे सैटरडे मॉर्निंग को रीस्केड्यूल कर ली. एंड दैट डे इटसेल्फ वी रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग पंक्चुअल, अदरवाइज यूल जस्ट हैव टू सफर अ लॉट. तो दैट डे वी रियलाइज्ड कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि दूसरों की टाइम की रिस्पेक्ट करना, खुद के टाइम की रिस्पेक्ट करना. एंड दैट्स हाउ यू बिकम सक्सेसफुल आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम. एंड दैट इंटरव्यू एंडेड एट 10 PM. वी वेंट टू आवर होटल एंड देन वी लेफ्ट एट 4 AM इन द मॉर्निंग बिकॉज वी हैड बुक्ड आवर फ्लाइट्स फॉर 6:30 AM. तो बहुत ही ऑल टुगेदर बहुत सही एक्सपीरियंस रहा है. ये बुक में आपको 20 यूनिकॉर्न फाउंडर्स के सक्सेस स्टोरीज मिलने वाले एंड इसमें आपको बहुत क्रिस्प इनसाइट्स मिलेंगे. इसका फॉरवर्ड लिखा है ऑनरेबल पीयूष गोयल सर ने. वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम. ही इज द कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ही इज वन ऑफ दोज पीपल हु हैव रियली एनकरेज्ड अ लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इन द इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम. A lot of successful founders and content creators have also endorsed this book with their blurbs in the start section. And then you will find the stories of 20 unicorn founders of India, what went behind the scenes, how did they get the idea, how did they scale their venture, and many other insights as well. So there are companies like Car Dekho Group, Cars24, CoinDCX, Daily Hunt, Dealshare, Eruditus, First Cry, Fractal, Good Glam Group, Grow, Mamaearth, Off Business, Oxizo, Oyo, Policy Bazaar, Pristine Care, Razorpay, ShareChat, Vedantu and Zerodha. इसमें मैं बताऊं तो हमको पूरे 8 महीने लग गए पूरे इंटरव्यूज खत्म करने के लिए. मई 2022 से लेके जैन 2023 तक हमने सारे इंटरव्यूज खत्म किए. नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमने पूरा एक फर्स्ट मैन्यूस्क्रिप्ट रेडी किया, पेंगुइन को दिया. वी कन्विंस्ड देम कि हमारे सोशल मीडिया फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग है. हमने बुक पहले भी लिखी है, मैंने ईसिंग सीए बुक लिखी थी, ईशान ने क्रश इट ऑन लिंक्डइन बुक लिखी थी. एंड फाइनली 2 weeks आफ्टर आर कन्विंसिंग, पेंगुइन टोल्ड दैट दे आर रेडी टू पब्लिश आवर बुक. एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स बिकॉज आई नेवर इमेजिन्ड दैट आई वुड बी एबल टू पब्लिश अ बुक एट द एज ऑफ 24. दिस इज अ स्टोरी व्हिच विल ऑलवेज बी देयर विथ मी थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ माई लाइफ. एंड आई एम super grateful to Penguin also for accepting our request of publishing the book. And इसमें आपको बहुत सारे interesting insights मिलने वाले. Like few of them, if I can just leak out for you, right? Like आपको एक sneak peek देता हूँ मैं. One of the best advice which we have got from Lalit Keshre is that he's the founder of Grow. We got an advice that whenever you are diluting your stake, don't think as if you are diluting your stake. ऐसा mindset नहीं होना चाहिए कि मेरी equity कम हो रही है. ऐसा mindset होना चाहिए कि आपने आपका stake बेच दिया है एक venture capital investor को and आपने थोड़ा stake exit कर लिया है. So if that is the mindset, you won't feel bad कि यार इतना stake dilute हो गया. You will feel कि अरे मैंने 15% कंपनी का बेच दिया और मैंने इतना कमा लिया है. That is a mindset which is very very important. The second piece of advice which we have got is from Srikanth, who is the founder of Fractal Analytics, which is doing 2000 crores in revenue, which is also profitable and has 4000 employees as well. उन्होंने हमें ये सिखाया कि whenever you want to raise capital, don't ask for money, ask for advice. Whenever you want advice, ask for money and automatically you will get advice. So this is a mantra which we are following in our startups as well. And the third piece of advice which we have got from Ruchi Kalra, who is the founder of Oxizo, she mentioned that if you hire A's, you will always recruit more A's. If you hire B's, those B's will end up hiring B's. And if you hire C's, you will end up hiring more C's. Meaning that you always should hire A grade people so that they'll hire smarter people than them. And the smarter people you hire, chances of building a successful organization would improve significantly. So these are just some of the insights which I'd like to share. But all in all, this was an amazing experience reaching out to all the 20 unicorn founders, getting rejected by a lot of other founders as well. मुझे तो अभी भी इतना पता है, हमने एक फाउंडर को अचानक कॉल किया था and Ishan was like, hey, we want to interview you because we are writing a book, and that founder had cut the call immediately. So of course I won't name the founder as such, but these are some incidents which had happened with us. So make sure you're ordering this book. Link is in the description box. Pre-orders have already started and you will find this book everywhere on all the airports, in Crossword and a lot of bookstores as well. It'll be great help if you can just pre-order the book from Amazon as well so that we can become a bestseller, and that is our dream. If that happens, that'll be like the best gift you guys can give it to us. So make sure you're reading this. Give us feedback also. How do you like, which chapter do you like the most, and do tag us on social media handles if in case you end up ordering these books. So I hope this video was useful for all of you. I hope that this is something which will inspire you also. In case you are not good at writing or reading or let's say speaking English, it doesn't mean it's the end of the world.
It's just that you have to work upon yourself, improve every day, and ultimately you will achieve whatever you want in your life. So make sure you share this video with everyone. Buy our book Unlocking Unicorn Secrets. Make our dream come true of becoming this as a bestseller in entrepreneurship category, and we will definitely be forever grateful to you. Thank you so much for watching this video. Click on the link given in the description box. Order your copies right now and let us know how do you find it. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.